जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी मादरत लेट होने की जी, कुछ हम लेट हो गए स्टार्ट करने अपना लाइव सेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग three things in this live session. First of all, I will talk about the revised formula of IBCC. I will also talk about the exemptions of 3 O-level subjects for this year O-level students. Exemption may not be correct, but people are thinking it's an exemption. So how can they get equivalence even without passing 8 O-level subjects? And third, I will talk about modified examination arrangement for June 2022 examination. So first of all, the heading of our today's seminar, that is the revised formula of IBCC, that is Inter-Board Committee of Chairmen. So as most of you are aware that IBCC, that is Inter-Board Committee of Chairmen, it uses it converts grades of O and A level, or you can call them IGCSE and A level grades into marks, and there is a set formula. A star was given 90 irrespective of the actual score of the student. A was given 85, B was given 75, C was 65, D was 55, and E for 45, and U grade 0 marks. So that is how equivalence marks were awarded to students who chose to do O in A level and then decided to continue their education in Pakistan in higher education. So their grades were converted into the marks as the formula I already mentioned. This formula was more important for students who wished to continue their education in medical and engineering fields. For humanities and for LUMS, colleges like LUMS, this formula was not that important because those schools which are offering humanities or economics or accountancy, for them grades of O level mattered more than the converted marks. So students of economics and accounting were not at a real disadvantage as far as this formula was concerned, but students particularly of medical coming from A-level background were at a disadvantage. This was an unfair formula in the sense that there are total marks of 1100 for FSC, and a student mathematically can score up to 1100. He can score 1099, he can even score 1100. There is a mathematical possibility. However, top students used to get, like the student who topped the board probably used to get 1050, 1055, 1045 marks. On the other hand, students coming from the background of O and A level, assuming that the student was outstanding and the topper of A level field, and he scored all A stars, which was a very rare thing, that a student gets A stars in all 11 subjects, 8 of O level and 3 subjects of A level, and gets all 11 A stars. Even if with that exceptional, very good performance of 11 A stars, he would still be getting only 990. So the maximum marks available for an A-level student were only 990, whereas maximum marks for an FSC student were 1100. And asking both students to compete for a medical seat, where even a difference of 1 mark could be a huge difference, was quite unfair. So we have been protesting against it, we have been raising our voice, we have been telling this to IBCC officials. Thankfully, they heard our concerns, and yesterday they amended the formula. Please note that the formula for students with grades from E to A remain unchanged. There is no change in that. Means A will still get 85, B will still get 75, C will still get 65, D will still get 55, and E will still get 45. There is no change in that. But the change is only in A star grades. And these are the students who are actually affected, and these are the students who are actually aiming for a medical college admission. So their A star formula, instead of giving them the 90, which was the previous score, and there was a cap of 90, A star was 90 and not more than 90. That cap is now removed, and now students' grades will be converted into marks as per the following formula, which I am going to explain now. For 4 subjects,
that is mathematics, physics, chemistry and biology. 4 subjects: mathematics, physics, chemistry and biology. The average marks of those candidates will be taken, those who have scored above 90 and less than 100, like between 90 and 100. Those who have scored between 90 and 100 in FSC mathematics, their average will be taken. So all those candidates who took FSC exam in mathematics and they have scored between 90 and 100, their marks will be taken, added, and then divided by their total number, the average will come. That average score will be given to that student who has done A-level mathematics. Similarly, A-level biology, similarly A-level chemistry, and similarly A-level physics. And similarly O-level bio, O-level chemistry, O-level physics and O-level mathematics. That the average score of those candidates who scored between 90 and 100 will be taken and will be awarded to that student who has scored an A-star in that particular subject. That means that the students now can get, OA-level students can get more than 90, because the average of 90 and 100 is going to be somewhere between 90 and 100. It's not going to be exact 90 or maybe not 100. It can be 90 only when if all students of FSC have scored 90 marks, which probably is not a realistic thing to say. So earlier it was a maximum 90 for A-star, now it is going to be a minimum 90 for an A-star. It is definitely going to be more than 90, that is maybe 94, 95. So my guess is that the A-star students can now get roughly around 94 and 95 instead of 90. So a student of a last year with 11 A-star could have been given only 990. The same student now can get around 1035 to 1045 marks, which will increase the chances of getting admission into a medical college. So these students who will now be getting maybe 40-50 more marks, they run a better chance of getting admission into a medical university. This formula is a tentative formula and it is applicable. The good news is it is applicable from June 2021 exam series, including the mini exams. Let me see this question. Okay. A-level FSC. G. So this formula, this revised formula, that is A-star grade, will not be given 90, it will be given the average of the score scored in the relevant subject by local examination system students. So there are other subjects as well, like Urdu O-level, Pak Studies O-level, English O-level, mathematics O-level to count kar liya humne. So there are other subjects as well, which are English O-level. So they are also going to be given the average, but they are not going to be given the average of their relevant subject. What will they do? That they will take the average of these 4 subjects I mentioned: mathematics, physics, chemistry and bio. Their average score will be the score for the relevant subject of O-level and A-level, and for the other subjects the average of these 4 subjects will be considered. तो इंग्लिश का जो स्कोर आएगा, A-star अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो the grade you will, the marks will get will be the average score of those candidates who have taken exams in O-level mathematics, in metric mathematics, in metric FSC, in metric mathematics, in metric biology, in metric physics, in metric chemistry. तो इन चारों का जो एवरेज स्कोर है 90 और 100 वाले बच्चों का, बिटवीन 90 और 100, वो जो स्कोर है वो स्कोर एवरेज बन जाएगा इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, पाक स्टडीज के लिए, इस्लामियात के लिए. पर फॉर इंग्लिश, जिन बच्चों ने इंग्लिश का पेपर दिया है मैट्रिक में, फॉर मैथमेटिक्स, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है मैट्रिक का, 90 और 100 जो स्कोर आया है उसकी एवरेज मैट्रिक A-star को मिलेगी. इस तरह FSC में जो बच्चों ने बायो का पेपर दिया है और उनके 100 और 90 के बीच में नंबर हैं, उसकी एवरेज बायो A-level के A-star को मिलेगी. केमिस्ट्री, जिन बच्चों ने FSC केमिस्ट्री का पेपर दिया है, 90 और 100 में स्कोर लिया है, उनकी एवरेज केमिस्ट्री A-star को मिलेगी, A-level. इस तरह जिन्होंने FSC में बायो जो है फिजिक्स की है FSC में और 90 और 100 में स्कोर लिया है, उनकी एवरेज A-level में फिजिक्स A-star लेने वाले को मिलेगी. तो ये और जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है फॉर एग्जाम्पल A-level का, तो उसकी जो है A-star वाले बच्चे को स्कोर मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चारों सब्जेक्ट का जो एवरेज स्कोर बनेगा 90 और 100 के बच्चों का, वो उसको मिलेगा.
तो ये फॉर्मूला होता है। अब है जी इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द मैसेज फॉर स्टूडेंट्स हु डिड ओ लेवल दिस ईयर and they are now confused whether they do FSC or they do A level to become a medical doctor in future. So my strong suggestion that students who did well in O level, who got A stars, majority of their grades are A stars or A's, they should consider doing A level. Why? There are 4 reasons. Number 1, the formula is converted now, and students with A star, they can get up to maybe 1045 marks now. There is no cap now of 990. They can get well above 990. So there is one benefit. Number 2, O level students should know this, that if they do FSC after O level, the weightage of their O level will be very, very low. But if they choose to do FSC, if they choose to do A level after O level, the weightage of their same O level will be a lot higher. Now let me tell you this. This is a very complex and technical thing. Let me just explain this without a chart, without a diagram, without a table. So let me quote this formula. We all know that MD-CAT, that is an entry test for medical colleges, carries 50% weight. The remaining 50% is allocated between matric and FSC. Earlier it used to be 10 matric and 40 FSC, but last year it was 50 for FSC and 0 for matric. This year they have not decided yet, and they are planning, probably they will go back for the older system, 10 for matric and 40 for FSC. But at the moment it is like roughly 50 for FSC. So 50 marks for FSC means matric के 0 number है और FSC के 50. Those 50 marks will be allocated not only to A level grades only. Those 50 marks will be given to both O and A level. As you know, there are 8 subjects of O level and 3 A level. So out of that 50 marks, 8 out of 11, that is 8 out of 11 subjects, will be given to O level, and 3 out of 11 will be given to A level. So roughly, if a student does FSC, matric and FSC, उसके नंबर हैं 50 FSC के, 50 MD-CAT के. जो बच्चा करता है ओ ए लेवल और मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसके ओ लेवल के 36 और ए लेवल के 14, तो 36 इज वेरी हाई परसेंटेज. अगर वो बच्चा ओ लेवल के बाद एफएससी करता है तो ओ लेवल 0 एंड एफएससी 50 सॉरी ए लेवल के, अगर वो ओ लेवल के बाद एफएससी करता है तो मेरी बात सुन लीजिए क्लियरली, इफ ही डज ओ लेवल एंड देन डज एफएससी, ओ लेवल इज 0, एफएससी इज 50. अगर वो ओ लेवल के बाद ए लेवल करता है, ओ लेवल 36 और ए लेवल 14, ये है इस असम्पशन पे कि एफएससी को 50 दिया जा रहा है. अगर हम असम्पशन ये ले लें कि एफएससी को 40 और ओ लेवल को मैट्रिक को 10, तो उस सूरत में ये होगा कि जो बच्चा मैट्रिक करेगा और एफएससी करेगा उसको मैट्रिक के 10 और एफएससी के 40, और अगर वो ओ लेवल के करेगा और उसके बाद एफएससी करेगा तो ओ लेवल को 10 और ए लेवल एफएससी को 40. पर अगर वो ओ लेवल के बाद करता है ए लेवल तो ओ लेवल को 39 और ए लेवल को 11. ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं. इसके लिए काइंडली यू कैन वॉच में वीडियो जो कि मैंने कंपैरिजन एफएससी और मैट्रिक का किया हुआ है, एफएससी और ए लेवल का कंपैरिजन किया हुआ है, आईबीसीसी फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, तो आप काइंडली वो वीडियो देखिए, उसमें ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूला आता है. तो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई एम सॉरी आपका टाइम कीमती है, पर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में बता दूं कि अगर हम ये अज्यूम करें कि एफएससी का वेट 50 है, मैट्रिक का 0 है, तो अगर आप ओ लेवल करेंगे और एफएससी करेंगे तो ओ लेवल 0, एफएससी 50, और अगर आप ओ लेवल की बजाय ओ लेवल के बाद ए लेवल करेंगे तो ओ लेवल 36, ए लेवल 14, और अगर हम ये अज्यूम करें कि एफएससी 40 और मैट्रिक 10 वाली डिस्ट्रीब्यूशन पुराने वाली चलेगी, तो फिर आपका ओ लेवल है 36 और 39 और ए लेवल है 11. अगर आप ओ लेवल के बाद ए लेवल करते हैं, अगर ओ लेवल के बाद एफएससी करते हैं तो ओ लेवल 10 और एफएससी 40. तो आप जरा देखिए दोनों सूरतों में एक चीज नजर आ रही है कि अगर आप ओ लेवल के बाद एफएससी करेंगे, ओ लेवल का वेट बहुत थोड़ा है, 0 है या 10 है, और अगर आप ओ लेवल के बाद ए लेवल करते हैं तो ओ लेवल का वेट बहुत हाई है, या वो 36 है या 39 है. तो मुझे बताएं, अगर आपको ओ लेवल में अच्छे ए स्टार्स आए हैं
तो फिर आपको क्यों एफएससी करनी चाहिए? आप अपने हाई स्कोर को कैपिटलाइज करें और ओ लेवल को वो वेटेज दें जो हाई है। ओ लेवल की कोई वेटेज नहीं अगर आप एफएससी करें, आपको ओ लेवल के 8 ए स्टार ज्यादा चले जाएंगे अगर आप एफएससी में चले जाएं। लेकिन अगर आप ओ लेवल से बाद ए लेवल करते हैं तो आपको उस 8 ए स्टार का मतलब है कि आपने तकरीबन 36 या 39 मार्क्स में मोर देन 90% मार्क्स ले लिए और अब आपको बहुत थोड़ा काम करना है ए लेवल के अंदर टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज। दूसरा आर्गुमेंट मेरा ये है कि ओ लेवल बच्चे जो लाइक बच्चे हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट हैं, उनको क्यों ए लेवल करना चाहिए एफएससी की बजाय? क्योंकि उनकी ओ लेवल की वेटेज ज्यादा होगी। तीसरा बेनिफिट, ओ लेवल के बच्चे जब ए लेवल में आते हैं तो वो अगर 4 सब्जेक्ट चूज करें ए लेवल में, 3 की बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मैथमेटिक्स पढ़ें, तो एट द सेम टाइम वो प्री मेडिकल भी पढ़ें और प्री इंजीनियरिंग भी। एफएससी के बच्चे को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एफएससी का बच्चा या प्री मेडिकल करेगा या प्री इंजीनियरिंग करेगा, जबकि ए लेवल का बच्चा एक ही अटेम्प्ट में दोनों ऑप्शन अपने लिए ओपन कर सकता है। और इन केस मैथ पढ़ता है और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, मैथ की सूरत में उसके बाद इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, सबकी बैकअप ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो तीसरा बेनिफिट ए लेवल करने का ये है कि आपके पास बैकअप ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में भी, प्रोवाइडेड आप 3 की बजाय 4 ए लेवल करें, मैथमेटिक्स को शामिल कर लें। अगला बेनिफिट, आपने ग्रेड इंप्रूव करना है ए लेवल का, तो एक सब्जेक्ट भी करके आप ग्रेड इंप्रूव कर लेंगे। एफएससी में सारा का सारा रिपीट करना पड़ेगा। बाकी एफएससी की उर्दू, एफएससी की पाक स्टडी इस्लामियात बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम ओ लेवल बैकग्राउंड। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है कि आप ए लेवल करें। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जिन बच्चों ने जून 21 में ओ लेवल के एग्जाम दिए हैं, अभी उनका रिजल्ट आना है मिनी एग्जाम का, वो बच्चे जो है वो अगर उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं वो जरूर एफएससी की बजाय ए लेवल को ऑप्ट करें। दूसरा, और कोई मजीद क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बड़े ज्यादा क्वेश्चन नहीं, तो मैं ये क्वेश्चन के आंसर शायद बाद में करता हूँ, क्योंकि ये मुश्किल होगा मेरे लिए क्वेश्चन सारे पढ़ना ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो हम बाद में पोस्ट कर देंगे, यहाँ एंड पे मैं देखूंगा। दूसरी जो बात मुझे करनी है, आईबीसीसी का इक्विवेलेंस जो प्रोविजनल मिल रहा है, देखिए इसमें देयर इज ए मिसकंसेप्शन, कोई एग्जामिशन नहीं मिली आपको। लाइक प्रीवियस ईयर्स 8 के 8 सब्जेक्ट करने हैं। टू गेट इक्विवेलेंस you need to do 5 compulsory subjects which are mathematics, English, Urdu, Pak Studies and Islamiyat and 3 electives. ये मस्ट रिक्वायरमेंट है, आज भी है, पहले भी ये थी। 8 सब्जेक्ट्स करने पास। हुआ ये कि मिनी एग्जाम जब हुए तो पाक स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू के एग्जाम नहीं हुए मिनी एग्जाम में। अज्यूम किया जिन लोगों ने ये प्लान किया कि ये बच्चे आमतौर पर पहले ही दे लेते हैं, 2 साल के बाद पाक स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू दे लेते हैं, तो वो 5 और करेंगे तो उनके 8 पूरे हो जाएंगे। हालांकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who do not do 3 these subjects in between their O level, they do it with other 5 subjects. तो there are many students जिनके 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट हुए हैं। उन्होंने मैथ जो है अभी उन्होंने इस्लामियात, पाक स्टडीज और उर्दू में से कोई सब्जेक्ट देने हैं। वो चूंकि एग्जाम कैंसिल हो गए, उनको एंट्री शिफ्ट करनी पड़ेगी जो नवंबर में। अब उन बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, एग्जाम तो कैंसिल किए किसी और ने। तो उन बच्चों के लिए प्रोविजनल इक्विवेलेंस का अरेंजमेंट किया गया है। प्रोविजनल इक्विवेलेंस मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट देने नहीं है, आपको सब्जेक्ट फ्यूचर एग्जाम सीरीज में देने हैं। हाँ, अभी नहीं दिए हुए, अभी उनके रिजल्ट के बगैर आपको इक्विवेलेंस मिल जाएगी। 2 शर्तें, इफ यू मीट 2 कंडीशंस यू कैन गेट ए प्रोविजनल इक्विवेलेंस इवन इफ यू पास लेस देन 8 सब्जेक्ट्स। देयर आर 2 कंडीशंस। 1, you must have done the other 5 subjects which are mathematics, English language and 3 electives of your choice। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया आपको मेडिकल की मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह कंप्यूटिंग ली है तो इंजीनियरिंग की मिलेगी, और कोई 3 इलेक्टिव की हैं तो कोई और तो ह्यूमैनिटीज की मिलेगी। तो यू कैन गेट द इक्विवेलेंस प्रोवाइडेड यू हैव डन दीज 5 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड 3 इलेक्टिव्स। Plus, second condition, you have sent the exam entry for other 3 subjects which are Urdu, Islamic and Pak Studies for the forthcoming October-November series। तो अगर आपको इक्विवेलेंस बनवानी है, आपने एफएससी में एडमिशन लेना है ओ लेवल के बाद, जो कि मैं मना कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे ना ले वो एडमिशन, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं किसी और वजह से एफएससी में एडमिशन, आप जाइए लाहौर, वो जहाँ पे इक्विवेलेंस का ऑफिस है, उनके पास लेके जाइए अपना रिजल्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपने पहले को दिए हुए हैं या अभी जून में दिया है उसका प्रूफ लेके जाएंगे आपने पेपर दिए हुए हैं 5 ओ लेवल के या 5 से ज्यादा, और बाकियों की आपने एग्जाम एंट्री अक्टूबर नवंबर भेज दी है, तो आपको इक्विवेलेंस प्रोविजनल मिल जाएगी। ठीक, लेकिन ये बात समझें कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पाक स्टडीज, इस्लामिक, उर्दू, यू हैव टू टेक देम, बट यू आर गिवन ए वेवर फॉर द टाइम बीइंग दैट जून 21 में आपने वो नहीं किए हुए।
कुछ बच्चों ने नहीं किए हुए, तो उनको वेवर है अज्यूमिंग कि उन्होंने एंट्री भेजी है। अगर किसी बच्चे ने एंट्री भी नहीं भेजी अक्टूबर नवंबर में और पास स्टडी इस्लामिक उर्दू किया भी नहीं अभी, तो उसको प्रोविजनल इक्विवेलेंस नहीं मिलेगी। आखिरी बात, मॉडिफाइड एग्जामिनेशन अरेंजमेंट। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी और मैंने कहा था कि एग्जाम बोर्ड्स कंसल्टेशन कर रहे हैं कि वो सिलेबस को रिड्यूस करें, जून 22 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल को एग्जाम करें, कोई इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए वो मजीद बच्चों को सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करें, कोई सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाएं। ये कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुकी है 30 जुलाई को, और ये एक्सपेक्टेड था कि अगस्त के मंथ में वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे और स्कूल्स को एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट जो है कहाँ सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कहाँ नहीं हुआ और क्या और डिसीजन हैं प्रैक्टिकल के बारे में। वो अभी तक आउटकम शेयर नहीं की गई। वी आर वेटिंग, वी आर होपफुल इन अ वीक और 2 वीक वो हमें ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कंसल्टेशन कंक्लूड हो गई है और ये सब एग्जाम बोर्ड ने की है, केम्ब्रिज ने भी की है, OCR, AQA, एडेक्सल, पियर्सन जिसको हम कहते हैं, ये सब ने की है। और ये कंसल्टेशन में सब स्टेक होल्डर आए हैं जिन्होंने भी इनपुट दी है, उसको वो कंपाइल कर रहे हैं। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हो जाए जून 22 के एग्जाम के लिए, और प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन जो अभी नवंबर में भी अवेलेबल है वो अगले जून में भी अवेलेबल हो बच्चों को। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता हूँ जी। पहला क्वेश्चन है जी, IBCC की वेबसाइट पे कब मेंशन होगा? मे भी आज हो, कल हो, पर ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ। कल ही डिसीजन हुआ है, अब दे मे टेक सम टाइम इन बट दिस इज कंफर्म न्यूज़, मैंने जिम्मेदारी के साथ आपको बताई। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है जी, कोई रिजल्ट नहीं आया A लेवल में जी, तो कोई मैल प्रैक्टिस का केस है तो उसका मतलब है कोई चीटिंग का केस है। तो अगर कोई चीटिंग का केस है उसमें ये प्रूफ है उनके पास कि 2 बच्चों का गलत आंसर मैच कर रहा है या बिल्कुल वर्ड बाई वर्ड आंसर मैच कर रहे हैं, तो उनके पास कोई एविडेंस है तो आप उसको चैलेंज कीजिए अगर मैल प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व नहीं है तो। और अगर आप हैं तो कन्फेस कीजिए, सच है वो बताइए केम्ब्रिज को और ब्रिटिश काउंसिल को। 2019 में एक बच्चे ने किया है A लेवल 2021 में नहीं, आपके ऊपर A लेवल जून 21 में अगर किया है तो A लेवल तो उस पर एप्लीकेबल होगा, और जिन्होंने उससे पहले O लेवल किया हुआ है O लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ जून 21 के ग्रेड्स के ऊपर A स्टार की कन्वर्जन एप्लीकेबल होगी जी। तो बिजनेस A लेवल के बारे में क्या, मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन जी। जी आपने अगर 6 सब्जेक्ट किए हैं O लेवल में जुलाई सीरीज में तो बिल्कुल आपको इक्विवेलेंस मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपने इंग्लिश मैथ जरूर किया है और 3 इलेक्टिव किए हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपके रह गए हैं उनकी आपने एग्जाम एंट्री भेजी हुई है अक्टूबर नवंबर के लिए, तो फिर आपको इक्विवेलेंस मिल सकती है। हाउएवर दोज हु डिड AS इन 2021 व्हाट इज द फार्मूला फॉर देम इन ONA लेवल? जी जो AS 21 में किया है वो AS काउंट ही नहीं होता इक्विवेलेंस के वक्त, A लेवल का फाइनल रिजल्ट काउंट होगा। क्योंकि ये फार्मूला इस साल आया है, अगले साल इस फार्मूला में चेंजेस आ सकती हैं। ये इस फार्मूला के लिए ज़ाहिर है पहली दफा कर रहे हैं दे में, तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जून 21, बट आई होप कि ये से बेहतर फार्मूला जो है वो अगले साल में एप्लीकेबल होगा। तो जो अगले साल रिजल्ट आएगा उस पर अगले साल का फार्मूला एप्लीकेबल होगा जी। एक क्वेश्चन वहां पर आ रहा है कि 6 सब्जेक्ट के साथ इक्विवेलेंस मिल सकती है। मैंने पहले बताया 2 कंडीशन पूरी हों कि आपने 5 सब्जेक्ट किए हैं, मैथ्स, इंग्लिश और 3 इलेक्टिव, और बाकी 3 की यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पे इनकी एंट्री भेजी हुई है अक्टूबर नवंबर के लिए, तो आपको प्रोविजनल इक्विवेलेंस मिल सकती है जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब बोर्ड्स का डाटा आएगा। जिन बच्चों ने 90 और 100 के दरमियान नंबर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल FSC बायोलॉजी में सब बोर्ड्स में जिन बच्चों ने 90 से 100 नंबर लिए हैं उनके नंबर टोटल किए जाएंगे और उनकी एवरेज निकाली जाएगी और वो A स्टार बायो A लेवल वाले बच्चों को मिल जाएंगे। तो ये सब बोर्ड्स का डाटा कैलकुलेट होगा। हाँ इसमें चूंकि पहले दफा वो कर रहे हैं तो देयर मे बी सम डिफिकल्टीज इन मेकिंग दोस कैलकुलेशंस, बड़ा लंबा डाटाबेस है, लेकिन उन्होंने कमिट किया है, वी होप कि वो करेंगे। अगर वो ना कर सकें, कोई तब्दीली आए तो वो अगले साल के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इस साल के लिए ये बाकायदा अप्रूव हो गया। कल कराची में मीटिंग हुई है IBCC की, उसमें ये फार्मूला अप्रूव हो गया है। और जो पहले वाली बात थी 5 सब्जेक्ट वाली, वो IBCC ने पहले से अप्रूव की हुई है। और तीसरी बात जो है उसका हम बच्चियों का वेट कर रहे हैं कि मॉडिफाइड एग्जाम मैनेजमेंट क्या होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव वीडियो। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे।